if you can be in an ocean where you are the only shark, wouldn't that be better? One thing which I have done is that, for 6 years of my career, I was just creating content in English. This year I have pivoted. I've started creating content in Hindi, not because of any reason. It's just that, Hindi connects better. Know so many coaches, not coaches, I would literally call them content creators, because they have like 100k followers, 200k followers, but business kahan pe unka? Negligible. Because they have built their tallest building by burning buildings of others down. Saturation हुई है, उसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा. Keep in mind, you are not reinventing yourself, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा. What's up guys, hope you are well. Welcome to another episode of Better Coach, Better Business, the podcast where we help you become a better coach and level up your fitness business. And guys, today we'll be talking about 2023 fitness industry review. In 2021 and 2022, it was much easier to grow your business. Just post content, just be consistent and you are good. But 2023 में ये चीज़ नहीं हो रही है. That means जो चीज़ें there are a lot of coaches who were literally able to grow their business in 2020, 21 and 22. That is not happening in 2023. वो डिस्कवर करेंगे एंड उसका सोल्यूशन डिस्कवर करेंगे विद द बिजनेस ग्रोथ चेकलिस्ट. इस चेकलिस्ट को अगर आपने टिक कर दिया सारे मार्कर्स को, तो योर बिजनेस वुड स्टिल ग्रो. फर्स्ट थिंग इज, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग. फर्स्ट थिंग इज कि कोचिंग में कंपटीशन ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है. टिल 2021 एंड 22 देयर वाज शॉर्टेज ऑफ गुड कोचेस. अभी भी गुड कोचेस की शॉर्टेज है, बट इशू क्या है कि बहुत सारे गुड कोचेस हो चुके हैं, प्लस मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग एवरेज स्टफ. अब ये जब भी मैं एवरेज स्टफ की बात करता हूँ, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ये एवरेज का मतलब क्या है. एवरेज का मतलब है व्हेन एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, 80% बंदे सेम चीज़ कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज एवरेज. तो आप खुद देख लो कि आपका डज योर कंटेंट लुक लाइक समवन एल्सेस कंटेंट, देन यू आर डूइंग एवरेज वर्क. सो 2021 और 22 में क्या हो रहा था कि ये चीज़ केक वॉक थी. इंडस्ट्री ने ग्रो करना स्टार्ट किया, स्पेशली पोस्ट कोविड, व्हेन देयर वर लिटरली कोचेस हु, लोगों को समझ आया कि यार ये ऑनलाइन इंडस्ट्री भी कुछ है, ऑनलाइन कोचिंग भी कुछ होता है. तो 2020 के लॉकडाउन के बाद ये पिकअप होना स्टार्ट हुआ. बट 2021-22 में इतने सारे कोचेस हो गए हु आर अबव एवरेज, दैट अब 2023 में लोगों को लग रहा है यार हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा. सो पहले थी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज गुड कोचेज और न्यूट्रिशनिस्ट की, अब वो शॉर्टेज कम हो गई है. दैट्स वाई योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग. नाउ आई डोंट मीन टू से कि भाई सैचुरेशन हुई है उसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा. कीप इन माइंड, यू आर नॉट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा. उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा इन अ सेकेंड, बट लेट्स डिस्कस अदर फैक्टर्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके साथ कैसे डील करना है. नंबर 1, बी बेटर देन अदर्स. गाइज, इंडियन कस्टमर इज़ वेरी स्मार्ट. इंडियन कस्टमर को 100 किलोमीटर दूर से दिख जाता है कि ये बंदा अच्छा है, एवरेज है, या ये बंदा बेटर दैन अदर्स है. यू हैव टू बिकम वॉट? बेटर दैन अदर्स. यू हैव टू ओवर डिलीवर इन ऑल एस्पेक्ट्स. बहुत बार कोचेस क्या करते हैं कि ओवर डिलीवरी सोचते हैं, यार जब मेरा क्लाइंट आएगा तब बात करेंगे. बट अभी फिलहाल सिनारियो ये है, इफ़ यू डू नॉट ओवर डिलीवर ऑन इंस्टाग्राम, इफ यू डोंट ओवर डिलीवर वैल्यू बिफोर समवन हैज बिकम योर कस्टमर, then the thing is you won't be able to over deliver to your clients because आपके पास clients ही नहीं आएंगे. So right now, first thing which you need to understand is you have to be better in everything: getting results, getting your own knowledge, getting referrals, getting renewals from your current clients, because it's much harder to acquire a new customer than keeping your clients for longer. सबसे बड़ी गलती कोचेस क्या करते हैं कि नए क्लाइंट्स के पीछे भागते रहते हैं, पुराने क्लाइंट्स को रिटेन नहीं करते. पुराने क्लाइंट्स को रिटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज दे ऑलरेडी ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई दे हैव पेड यू. प्लस you have already nurtured them a lot because they know, like and trust you. That's why they bought your service. So number 1, start servicing your clients better. Third, overpower everyone else when it comes to providing value. अब कोचेस क्या सोचते हैं कि यार मैं एक 30 सेकेंड्स की रील बना लूँगा 4 बार. That is what 30 seconds into 4, 2 minutes of work in a week, या 7 बार भी बना लूँगा, 3.5 minutes of value per week, and उसके बदले में मुझे क्लाइंट्स आने चाहिए. ये थोड़ा
अनप्रपोर्शनेट सी बात होगी है. सो अंडरस्टैंड दैट. ऑल्सो बिकम हाइपर स्पेसिफिक हु यू वर्क विद. गाइस एक कॉन्सेप्ट होता है रेड ओशन और ब्लू ओशन. अंडरस्टैंड करो कि सिंपल लॉजिक में इफ देयर इज एन ओशन जहाँ पे बहुत सारी शार्क्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर करके उस ओशन को रेड बना देगी. रेड स्टैंड फॉर ब्लड हेयर. बट ऑन द अदर स्पेक्ट्रम, if you can be in an ocean where you are the only shark, wouldn't that be better? Blue ocean, that would be better. And how can you create your own ocean or get into that blue ocean? By finding your niche find करो. Also 90% coaches को ये बात पता है कि niche find करनी है. Everyone on their bio writes I help busy people. Busy people, दुनिया का सबसे वेला इंसान भी होगा, उसको मन में लगता है कि मैं busy हूँ. तो busy people is not a niche. So keep that in mind. So become hyper specific who you work with, find your niche and do everything in relation to the niche, from your messaging on social media to your service to your differentiating factor when it comes to your coaching service. एक सिंपल क्वेश्चन आपने खुद से पूछना है कि यार किसी को आपकी कोचिंग क्यों खरीदनी चाहिए. अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है या आपके पास इसका जेनरिक आंसर है कि मेरी डाइट अच्छी है, मैं रिजल्ट्स ले आऊँगा, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, दैट डजंट मेक सेंस, राइट. यू नीड टू क्लियरली नो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू चेंज द गेम. सेकेंड चीज़ क्या हुई है, गुड कोचेस की अबंडेंस है, गुड कोचेस हु आर गेटिंग रिजल्ट्स उसकी अबंडेंस है. सेकेंड चीज़ अब क्या हो रही है, सोशल मीडिया पे भी इतना कॉम्पिटिशन है, देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर अटेंशन. पहले क्या था, टिल लास्ट ईयर ये था कि एवरी कोच वाज लाइक यार मैंने रील्स नहीं बनानी, एंड द कोचेस हु स्टार्टेड मेकिंग रील्स एंड स्टफ लाइक दैट स्टार्टेड ग्रोइंग. अब क्या हुआ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोचेस हु आर मेकिंग रील्स, राइट. सो उधर भी हाउ डू यू सेपरेट योरसेल्फ, हाउ डू यू कम आउट, गेट आउट ऑफ द क्राउड, इज बाय क्रिएटिंग बेटर कंटेंट. बट इसमें एक बीच में ऑब्स्टिकल क्या आ जाता है, दैट वी आर कोचेस, वी आर नॉट स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स. Number one is obviously learn how to be a better content creator, learn how to be more engaging. I'll give you some tips here. एक तो अपने hooks better करो. दूसरा, create more connection. Connection ज़्यादा create करना start करो and that will change the game. One thing which I have done is that for 6 years of my career I was just creating content in English. This year I have pivoted. I've started creating content in Hindi. Not because of any reason. It's just that Hindi connects better. And for me to articulate it's much better. For example, in front of me I have just some sentences written and I'm just using that for reference and literally I'm able to articulate everything. So just ask yourself, how can you connect better than others? How can you provide value in a more specific and in your own way? अब इसमें वैल्यू का एक एग्जाम्पल देता हूँ. लास्ट ईयर तक कुछ भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, दैट वॉज वर्किंग. Now there are thousands of coaches doing the same thing. For example, if someone asks you, यार प्रोटीन इंपॉर्टेंट कैसे है, प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट. Everyone on this planet knows. Whenever posting or whenever curating content, ask yourself कि या तो आप सेम मैसेज को बेटर तरीके में ट्रांसमिट करो, और इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, सेम मैसेज को क्यूरेट करो फॉर योर स्पेसिफिक नीश. दिस स्मॉल थिंग कैन चेंज द गेम. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से you should drink, everyone, I can create content for everyone and say that why you should drink more water. Or on the other spectrum, I can create content on why women with PCOD should drink more water. Game changer, right? Same चीज़ है, same messaging है, but it's curated for someone else. Also guys, इस ईयर क्या हुआ कि एल्गोरिदम बेटर हो गया, वर्ड्स नहीं हुआ. कोचेस को लगता है, मेरे को भी एक्चुअली पहले ये लगता था कि यार एल्गोरिदम हो गया बहुत बेकार, ऑर्गेनिक कंटेंट चल नहीं रहा है. बट ऑर्गेनिक हो गया मच बेटर, तो सिर्फ अच्छा कंटेंट चल रहा है. And it was even a reminder for me recently when I realized that if I'm posting good content pieces, then only they are working, otherwise they are not, right? So level up your content game and make it unique in your own way and be specific in that. Also keep in mind guys, सोशल मीडिया पे आते हैं जब हम रील्स वगैरह की बात करते हैं, हमें लगता है कि भाई कुछ रॉकेट साइंस करनी है. Just dumb down everything and understand that the basic principle is you are working with humans. And humans would want to work with you if they like you more, they trust you more, and they get more value from you. So always, whenever curating something, ask yourself that, is it humanized? Is it practical? Whatever advices I'm providing, and that would change the game. Next is
Adi industry, I see so many smart people in this industry who are literally trying to build their building by burning other buildings down. There are two ways of growing in your life and in business. Number one is you build the tallest building. The other way is start burning buildings of others down. 80% ऑफ स्मार्ट पीपल आर लिटरली डूइंग द लैटर. एंड गाइस, अब आप नेगेटिविटी से सोचोगे, ग्रो करने की कोशिश करोगे, यस, व्यूज एंड लाइक्स ग्रो होंगे बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू थिंक अबाउट द नेगेटिव और गेट अट्रैक्टेड टू नेगेटिव. बट who would you attract? Negative people, vele people, those who do not have anything to do, have all the time to spend on social media spreading or reacting to negativity. So question is yours: do you want positive people in your circle or negative people in your circle? And then decide. Keep in mind, negative stuff se views and likes zyada aate honge, but likes ain't cash. I know so many coaches, not coaches, I would literally call them content creators, because they have like 100k followers, 200k followers, but business kahan pe unka? Negligible. Because they have built their tallest building by burning buildings of others down. Don't do that. And positivity always wins. And that's the way to go. So for social media, all you need to do is you need to provide more value in your unique way, and just ask yourself ki yaar, if it is already available on the internet, do not even create it. In the beginning it's fine. When you are a beginner, that's totally fine, but after a while you need to level up, right? First 20-30 posts bana rahe ho, yes, start with generic stuff, that's fine, because right now you just have to learn how not to suck. After that you need to learn how to become exceptional. And this is where a lot of coaches are going wrong, because 2021-22 में क्या था, you should have more protein in your diet वाला कंटेंट बना रहे थे 100 लोग, अब बना रहे हैं 1000 या 10,000 लोग. That is where people are going wrong. Next is low nurture funnels are not working anymore. Guys, ये funnel जब word आता है, लोग एक तो पहली बार इसको buzzword की तरह यूज करते हैं. Guys, जब funnels की बात होती है, लोग funnels का नाम सुन के या तो आधे कोचेस डर जाते हैं या आधे कोचेस खुश हो जाते हैं कि वाओ, दिस इज समथिंग टेक्निकल. अब आपको फनल समझाता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है. फनल इज अ वे थ्रू विच समवन गेट्स इन योर सिस्टम, राइट? डिफरेंट फनल्स होते हैं. आपको सबसे बेसिक फनल समझा देता हूँ. यू क्रिएट गुड कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, पीपल डिस्कवर यू थ्रू इंस्टाग्राम और समवन शेयर्स योर कॉन्टेंट. तो उसमें क्या हुआ है, डिस्कवरी आपकी. तो बेसिकली पीपल गेट इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, जिसे कहते हैं लीड जनरेशन. उसके बाद क्या होता है, मे बी दे स्टार्ट फॉलोइंग यू. अब वो आपको फॉलो करने लग गए, आप कंटेंट पीसेस बना रहे हो, क्रेजी कंटेंट पीसेस बना रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशंस डाल रहे हो. उस वाले पार्ट में क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट डीपन होता है, और डीपन होता है एंड दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू मोर, बिकॉज उनको आपकी पर्सनैलिटी पता लगती है, ये पता लगता है द काइंड ऑफ वर्क यू डू, द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव, राइट? सो पहले हुई लीड जेन, दैट मीन्स दे डिस्कवर्ड यू एंड जनरेटेड इंटरेस्ट इन योर सर्विस. फिर आपने किया डीपन अपने इंटरेस्ट को, जिसे कहते हैं नर्चर. एंड उसके बाद एक दिन उठ के उन्होंने कहा यार मैंने ट्रांसफॉर्म होना है, और उनके दिमाग में आए सीधा आप. वो आपको मैसेज करते हैं, फिर आप उनको कॉल पे लाते हो, उसे कहते हैं कन्वर्जन. उसके बाद आता है कन्वर्ट हो गई, वो क्लाइंट बन गए. उसके बाद होती है एसेंशन या रिन्यूअल कह लो उसको. आप रिन्यूअल बेसिकली दे स्टे विद यू फॉर लॉन्गर, एंड जितने ज़्यादा टाइम तक वो आपके साथ रहते हैं उसको बेसिकली कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाना. कि मतलब आपके पास क्लाइंट आ रहा है, दे स्टे विद यू फॉर 3 years, दे पे यू फॉर 3 years, देयर लाइफ टाइम वैल्यू वुड बी मच हायर. इसमें एक और पार्ट आ जाता है रेफरल्स. रेफरल्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस. पहली बात तो यू कैन 100% कंट्रोल रेफरल्स बाय जस्ट डूइंग व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, दैट इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट सर्विस. रेफरल आर अ ट्रस्ट हैक. इमेजिन करो आपको इंस्टाग्राम पे किसी ने डिस्कवर किया, उन्होंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, फिर 3-4 महीने तक वो आपका कंटेंट फॉलो करते रहे, फिर उनको लगा यार ये बंदा ठीक है. वर्सेस आपने उनके फ्रेंड को ट्रांसफॉर्म किया, और उनके फ्रेंड ने आपको आके बोला कि यार मैंने इस बंदे से कोचिंग ली, मजा आ गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. उधर क्या हुआ, वो ट्रस्ट जो यहाँ पे था, सीधा ट्रस्ट यहाँ पे आ गया, बिकॉज यू हैव बीन रेफर्ड, राइट? सो रेफरल्स आर अमेजिंग फॉर इंक्रीजिंग द ट्रस्ट. सो अब बैक टू लो नर्चर फनल्स. तो गाइस, कोई भी किसी का भी क्लाइंट बन रहा है, इंस्टाग्राम पे बन रहा है, चाहे इंटरनेट किसी पेड एडवर्टाइजिंग फनल से बन रहा है,
सिर्फ ये 3 प्रोसेसेस ही हैं. You get attention of the person, you build your trust, you get on the call with the person, you convert them, and then you keep them for longer, get referrals from them or ascend them to the next level. अगर आपकी सर्विस की कोई नेक्स्ट लेवल है तो आप उनको ascend करोगे. Ascension का एग्जांपल देता हूँ. आप मे बी आपके 2 पैकेजेस हैं. वन इज ग्रुप कोचिंग, वन इज वन ऑन वन कोचिंग. ग्रुप कोचिंग इज लेवल 1, द बेसिक लेवल. बट किसी ने ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करी बट उनको मजा आ गया और उन्होंने कहा यार इस बंदे से मुझे वन ऑन वन कोचिंग चाहिए, तो वो आपने क्लाइंट की असेंशन कर दी, ग्रुप कोचिंग से वन ऑन वन कोचिंग पे ले. सो गाइस कीप इन माइंड व्हेनेवर एनीवन इज कन्वर्टिंग विद यू, इस सेम साइकिल से जा रहा है. तो इंटरनेट पे अलग अलग फनल्स हैं पेड मार्केटिंग में. एक तो फनल के एग्जांपल देता हूँ जो सबसे फेमस है. एक है VSL फनल. VSL फनल में क्या होता है, वो आपकी कोई इंटरेस्टिंग सी ऐड देखते हैं, ऐड पे आप कुछ कहते हो कि यार मेरा ये ऑफर है, ये वो, यू गेट अटेंशन ऑन दी एड और इवन ऑनलाइन. देन यू गेट दैट पर्सन ऑन आई एम सॉरी. नंबर 1, you get attention of the person. Second, you get that person to watch a 20-30 मिनट वीडियो. 20 मिनट की वीडियो जिसमें एक स्क्रिप्ट बनी होती है, जिसमें आप अपनी अथॉरिटी भी बिल्ड करते हो, मेथड भी बताते हो और एंड में कहते हो यार कॉल बुक कर लो मेरे साथ. अब उसमें पहले ये वर्क कर रहा था बिकॉज ये स्क्रिप्ट वॉज बीइंग यूज्ड बाय फ्यू पीपल. नाउ एवरीवन हैज़ द सेम ऑफर, एवरीवन हैज़ द सेम स्क्रिप्ट. अगर आप 10 कोचेस का VSL फनल देखोगे, सारे सेम बात कर रहे हैं, सेम स्टार्टिंग सेंडिंग तक स्ट्रक्चर हो रहा है. कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके कस्टमर को समझ आ जाता है कि भाई ये देखी हुई चीज़ लग रही है. तो पहले क्या था, टिल लास्ट ईयर 2021 एंड 22 दिस वाज वर्किंग बिकॉज ओनली फ्यू पीपल वर डूइंग दैट. नाउ एवरीवन इज डूइंग इट, राइट. तो पहले क्या हो रहा था कि आए वो 20 मिनट की आपकी वीडियो देखी, उन्होंने कॉल बुक कर ली, आपने कॉल पे सेल्स स्किल्स यूज़ करी अपनी एंड यू कन्वर्टेड देम. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज लोगों को सेम चीज़ की 50 एड्स दिख रही हैं, 50 अलग अलग लोग सेम बात कर रहे हैं. गाइस फनीली इंडियन इंडस्ट्री की बड़ी फनी बात है कि आई हैव सीन सो मेनी कोचेज यूज लिटरली द सेम स्क्रिप्ट वर्ड बाय वर्ड, एक आधा वर्ड इधर उधर चेंज करके. लोगों पीपल गेट टू नो, गाइस पीपल गेट टू नो एंड दैट पहले इट वाज वर्किंग, नाउ इट इज नॉट वर्किंग, राइट. पहले एटलीस्ट इट इज नॉट वर्किंग इफ यू आर अ हाई टिकट कोच एटलीस्ट. अब इंडिया में मैं हाई टिकट भी बता देता हूँ क्या है. फॉर फिटनेस कोचिंग एनीथिंग अबव 18,000 रुपीज इज हाई टिकट अकॉर्डिंग टू मी, राइट, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर कोच. वैसे से एक और फनल आ जाता है, वेबिनार फनल कहते हैं उसको. वो कुछ नहीं है, सेम चीज़ है. आप इंटरेस्ट कर रहे हो जनरेट कि मास्टर क्लास है, मैं आपको आई टीच यू समथिंग, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. यू गेट दैट पर्सन ऑन द वेबिनार. फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है. पेड वेबिनार लोग क्यों करते हैं? पेड इसलिए करते हैं बिकॉज इफ समवन इज पेइंग यू नो दैट यू आर गेटिंग अ क्वालिटी पर्सन वॉचिंग दिस. बिकॉज इंडिया में क्या है, मोस्ट पीपल वोंट बाय, even outside India that's the case. So even if you are charging someone 100 rupees 200 rupees, you're gauging their intent. आपको भी ये पता लग रहा है कि यार हाँ ये बंदा, this person is paying 200 rupees, that means this person is little interested, right. तो वेबिनार में क्या होता है, वही आपने वेबिनार पे बुलाया, 90 मिनट्स की एक स्क्रिप्ट भी होती है, आपका मेथड भी शेयर करते हो. मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्क्रिप्ट में सब कुछ ही स्क्रिप्टेड है, बट एक स्ट्रक्चर यूज होता है. बेटर देन स्क्रिप्ट इट वुड बी, स्ट्रक्चर वुड बी अ बेटर वर्ड. जनरली यू टॉक अबाउट व्हाट यू वुड बी कवरिंग. स्टार्टिंग में आप बोलोगे एंड में एक गिफ्ट है आपके लिए एंड स्टफ लाइक दैट. एंड टुवर्ड्स द एंड 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप कॉल बुक करते हो. अब इसमें क्या हुआ है, वेबिनार वगैरह में क्या होता है, वेबिनार की लेंथ थोड़ी लंबी होती है. वेबिनार और वर्कशॉप वट एवर यू कॉल इट, इनकी लेंथ लंबी होती है, VSL की लेंथ छोटी होती है. वेबिनार बहुत बार लाइव भी किए जाते हैं, VSL लाइव नहीं किया जाता. सो एक डिफरेंस ये है. और वेबिनार के एंड पे अगेन देयर आर डिफरेंट मॉडल्स डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, बट लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज एट एंड ऑफ द वेबिनार दे पिच अ प्रोडक्ट विच इज़ चीपर, 5,000 6,000 वो पिच करते हैं, क्योंकि 90 मिनट्स में आप 5,000 का ट्रस्ट ही बना सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं. वो भी पहले वर्क कर रहा था, दिस ईयर इट इज़ नॉट वर्किंग. वो भी क्यों, ओनली 1,000 पीपल वर डूइंग दैट वाज न्यू. नाउ इमेजिन यू आर अ कस्टमर और आपको दिन में 100 एड्स आती हैं ऐसी. लाइक आई मेंशन्ड, एल्गोरिथम बहुत अच्छा हो गया. अब आपको सेम चीज़ की 100 एड्स आ रही हैं, हु वुड विन? I would tell you, some people would still win. I actually experimented with all of these funnels and we got good results. And you know, why am I able to win? Because number 1, I have a brand built up. Second, I have a service built up which I know so deeply. Third, results, right? Fastest way to build authority, one is obviously referral. Other way is you have hundreds of results. Literally कोई बंदा मुझे अगर ad से भी वो करता है, हम उनको book भेजते हैं. Book में क्या होता है? Results, right?
तो वो वाली बात है, जिनका ब्रांड है, सी इफ समवन हैज अ ब्रांड, ऑल फनल्स वुड वर्क फॉर देम. If someone understands basic marketing, basic sales, and has a brand, anything would work. कोई भी funnel उठा लो, that would work. बहुत बार क्या कोचेस क्या करते हैं, ढूंढने लग जाते हैं मैजिकल फनल क्या है. आपने देखना है आपके लिए क्या वर्क करता है. सो इस पे भी मैं आऊँगा कि what to do in 2023. सो बेसिकली VSL वेबिनार, VSL हो गया, वेबिनार हो गया, या इंस्टाग्राम कंटेंट हो गया, सब में सेम चीज़ हो रही है. बट इंस्टाग्राम का एक मुझे पर्सनली एडवांटेज क्या लगता है, दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग कंटेंट राइट नाउ. दिस वुड बी यूज्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बोथ. दैट यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू नर्चर समवन, राइट. वेबिनार में कितना टाइम है आपके पास? 90 मिनट्स. VSL में कितने? 20 मिनट्स. इंस्टाग्राम पे कितना टाइम है? अनलिमिटेड. बट अगेन एफर्ट भी ज़्यादा डालना पड़ता है, वो भी फैक्ट है, बिकॉज VSL में क्या 20 मिनट्स करो, बट इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, राइट. So these are the fundamentals. So low nurture जो funnels थे, they are not working well. पहले they were new, so people were buying that stuff. Now they are not new. And also एक और चीज़ आपको कर देता हूँ, फिर भी आपने ये funnel use करने हैं तो find a very deep pain point and it would work better than others. Fat loss is not a very deep pain point. अगर आप किसी की डिजीज़ रिवर्सल करा रहे हो, टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स करवा रहे हो, PCOD रिवर्स करवा रहे हो, then these things would work a little better because you are solving a burning problem for them. Fat loss या सिर्फ हेल्थ की बातें कर रहे हो, that's not a burning problem for most people, right? But you can make it a burning problem if you nurture them enough by making them more problem aware, that which can be done through content. So basically क्या है कि पहले था 20 मिनट में भी काम चल जाता था, 90 मिनट्स में भी चल जाता था, अब नहीं चल रहा, राइट. कुछ लोगों के लिए चल रहा है जिनका ब्रांड बहुत अच्छा है या जिनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बिकॉज अगेन फनल्स आर अ मार्केटिंग थिंग गाइस, कीप इन माइंड. बट इफ यू आर नॉट अ ग्रेट मार्केटर, और इफ यू डोंट हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और इफ यू डोंट हैव अ ग्रेट ब्रांड, अब आपके लिए ये चीज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. आई नो सो मेनी पीपल ट्राइंग सिंस मंथ्स एंड ईयर्स, not years actually, few months, and zero clients are in. They're able to get people to the webinar, but लोग convert नहीं हो रहे, because everyone has literally the same offer, same offering, and they haven't learned the basics. The basics are, how do you stand out? How do you enter the blue ocean? Next is, ads are 5 times costlier than the last few years, because पहले भी क्या था, जैसे आपको बताया guys, इस वाले फनल वाली गेम में भी, एड्स वाली गेम में भी क्या हो रहा है, कंपटीशन है. पहले कुछ कंपटीशन नहीं था, अब एड्स पे भी कंपटीशन है. Ads are 5 times more costlier, and I'm getting to know that from people who already have pre-built funnels, but they are still joining FBA, or people who are teaching stuff organically, because they are like कि यार ad expenses इतने हैं कि हमें आधे टाइम तो ये टेंशन रहती है कि ये पैसे पूरे होंगे कि नहीं होंगे, राइट. सो इंस्टाग्राम वगैरह का एक फ़ायदा इसमें ये है, इट्स फ्री, बट यू आर स्टिल पेइंग, बट यू आर पेइंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी. सो आपको ओवरऑल प्रेशर कम आता है. एड्स आर कॉस्टलियर. मुझे खुद इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज मैंने खुद फनल्स यूज़ करने इस ईयर ही स्टार्ट करे हैं, मार्च अप्रैल में. आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद मार्च एंड अप्रैल, एंड क्वाइट फनीली एवरी फनल वर्कड वेल फॉर मी. वेबिनार कॉल्स बुक हो रही थी, VSL कॉल्स बुक हो रही हैं, एंड दैट इज़ वॉट. ऑल्दो आई एम बिल्डिंग अ मेथड राइट नाउ टू integrate these funnels in your Instagram thing, right? So I'm still building that, experimenting that, working well so far. But I think by next year, I would have a solution for those who started with organic. Now they want to scale with something called the hybrid method. It's not the hybrid method. I haven't named it anything, but it's just using common sense, which we'll share some other day. Today's agenda is not that. राइट. सो अगर कोचिंग ब्रांड आपका बिल्ट है तो गाइस कुछ भी वर्क करेगा. एड्स के लिए भी कर सकते हो. आई कैन स्पेंड 10 lakhs ऑन एड्स एवरी मंथ, एंड स्टिल इवन इफ जीरो ROI है या नेगेटिव है, आई विल बी लाइक ओके, आई हैव लर्न टू लिसन. बट फॉर बिगिनर्स दिस इज नॉट पॉसिबल. टिल लास्ट ईयर इट वॉज पॉसिबल बिकॉज चीपर था, लोगों को क्लाइंट बनाना ईजी था, क्लोज करना ईजी था. अब वो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस आई टॉक्ड अबाउट. कॉम्पिटिशन इन एवरीथिंग, कोचिंग, इंस्टाग्राम, कॉम्पिटिशन इन योर फनल्स, कॉम्पिटिशन इन योर एड्स. Okay, so all funnels should work for you if your brand is built up. So focus on building your brand. Next चीज बताता हूँ,
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें भी आपको एक थोड़ी थोड़ी सी डीप चीज़ बताऊंगा इफ़ यू हैव बीन रनिंग फनल्स। गाइज, keep in mind, coaches on Instagram specifically are not putting out enough offers. Offer is basically asking people to join your service directly or indirectly. Guys, a lot of times people look up to us at trained by YVS and they are like कि जो trained by YVS पे हो रहा है हम वो ही कर लेते हैं. Guys, if you want to copy something, copy the principles. What things I'm teaching you here. Don't copy other stuff. आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मैं जुलाई में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने गया टर्की. अब आप सोच रहे हो कि टर्की कहाँ से आ गया बीच में बिजनेस पॉडकास्ट के. I'll get you to the point. So जुलाई में I was busy plus I was experimenting with new funnels. So मैंने जुलाई में क्या सोचा कि यार मैं कोई कंटेंट नहीं पोस्ट करूँगा, कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पोस्ट करूँगा, एंड आई विल सी वेदर माई बिजनेस इज ग्रोइंग और नॉट. माई बिजनेस स्टिल ग्रू मार्जिनली. Very good, right? But I was spending money on ads also, and other stuff also. Now, if you, as a beginner you copy that and आपका revenue zero हो जाए, would that be right? The answer is no. So whenever copying someone, see what are they doing. मैं तो सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था. एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूँ क्या कर रहा था. मैं कंटेंट पोस्ट कर करके हो गया था बोर. 1700 पोस्ट हो चुके थे ऑलरेडी. आई वाज लाइक यार इतना कंटेंट बना चुका हूँ. आई डोंट वांट टू क्रिएट कंटेंट फॉर लीड्स. So I was just experimenting that, what would be the stability of my business if I'm not putting out any offers whatsoever. Now, if you copy that, you'll see your business becomes much lower and close to zero if you're not putting out enough offers. So guys, पहली चीज़ आपने करनी है, ऑफर ज़्यादा डालने हैं. ऑफर का एग्जाम्पल दे देता हूँ. मल्टीपल वेज से हो सकते हैं. On an average, you should put out at least 25 to 30 offers per month. Offers can be done in multiple ways. Number one, you can put out a private offer. Start conversations with everyone who is engaging with your content and see if they need your help. Other way to put offer is put out a transformation and tell them, DM me the word transform. Another option is Q&A karo, or Q&A if someone asks ki yaar, okay, I'm interested in your coaching, talk about how you can help them, right? Next is innovative ways of putting out offers. There are multiple ways. One of the ways is I'm looking for 5 people who are looking to get to this goal. I'm looking for 5 people who want to transform before 2023 ends, right? Stuff like that. Apart from that, you can, get novelty. Novelty क्या होता है? नई चीज़ ले आओ. For example, I'll say, summer आ रही है. Hi guys, I'm starting a summer shed. That is also an offer. Guys, you should put out 25 plus offers every month. अब ये फनल्स में क्या होता है गाइज, ये ऑटोमेटिक वाले एड्स वाले फनल्स में ये ऑफर्स ऑटोमेटिकली हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपके वेबिनार पे लोग आ रहे हैं और एंड में आप कह रहे हो बाय माई 5000 रुपी प्रोडक्ट. इन अ वे पीपल आर, यू आर ऑफरिंग इट टू मे बी 100 people if 100 people are watching. So that is what. But Instagram पे भी you can do the same thing. So put out more offers and don't. आपने भी अगर सेम चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी से, इफ योर इंटेंटेड सेम कि यार आई वांट टू put out zero new content, zero transformations, and I want to see where my business is, then don't put out offers. ये मत सोचो कि यार यश ने कंटेंट बनाना बंद कर दिया, मैं भी कर देता हूँ. Just understand my intent and or just ask me, just DM me, right? DM me and ask that, bro, why are you not posting content? उसमें मुझे भी अच्छा लगेगा कि I would be like, at least someone cares, right? So that is what. So keep that in mind and again, put out more offers. Because people on social media have a very short memory. रील्स वगैरह की वजह से, एल्गोरिदम्स की वजह से क्या होगा, मेमोरी सबकी कम होगी, अटेंशन स्पैन कम है. तो आपको इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज याद दिलाना लोगों को कि यार मेरी कोचिंग लो. एंड दिस कैन बी डन इन मल्टीपल वेज. इट कैन बी डन इन मैसेजेस, इट कैन बी डन ऑन स्टोरीज, इट कैन बी डन ऑन कॉन्टेंट, इट कैन बी डन ऑन रील्स. फाइंड इनोवेटिव वेज. बट एटलीस्ट आज लिख लो नंबर 25. आज से आपने टैटू बनवा लेना, 25 नंबर लिख लेना, बिकॉज आपने 25 ऑफर्स डालने हैं मिनिमम. वो भी मैं आपको 5 दिन की छुट्टी इसलिए दे रहा हूँ. आई एम लाइक ओके, एक दिन बीमार हो गया और 4 दिन संडेज एंड स्टफ लाइक दैट. बट एनीवे, संडे इज अ ग्रेट डे टू पुट इन ऑफर्स. रीजन फॉर दैट इज व्हाट? People are spending more time on social media. A lot of people are in that guilt mode after their alcohol and stuff like that. So that is why put offers on Sundays also. Okay, so next is comfort zone. Guys, कंफर्ट जोन अब सबका चेंज हो गया. पहले क्या था कि सिर्फ एक कंफर्ट जोन था जो सबने टारगेट करना था कि यार मैं रील्स बनानी स्टार्ट कर दूं. दैट वाज द कंफर्ट जोन. बट इस साल क्या हुआ, 2023 और 2022 एंड में एवरीवन स्टार्टेड पोस्टिंग रील्स. क्या हुआ, अब वो भी
Your prospects are seeing hundreds of people posting reels. Either you have to be very good at reels, very good and very specific at content, very entertaining, or one very simple thing, you have to do it better than others, more than others. More is also a good marker. If you are able to maintain quality, do more. सो पहले था कि रील्स वाला कंफर्ट जोन था, अब कंफर्ट जोन सबका डिफरेंट है. मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ विच आई सी डे इन एंड डे आउट. इफ यू आर अ कोच who's already at 3 to 5 lakh rupees per month, maybe your comfort zone is staying in your business as a one-man business. You might have to expand your team, get your first virtual assistant, or whatever way you want to grow your team. For others is getting on the next level as a coach, improving their service, improving their knowledge, and investing in themselves. So कुछ लोगों के लिए अलग है. If you are someone who got complacent last year, stopped investing in yourself, your own knowledge, your own business, that's an issue. For some, it's just getting back to basics. Coaches क्या बहुत बड़ी गलती करते हैं, they start getting rushes from doing new things. नया funnel try करना है. I know I have a couple of coaches in my mind who are great coaches, but where they are going wrong is they're just jumping from one strategy to another as finding the shiny object. जब उसमें थोड़ा सा रिजल्ट आने लगता है किसी भी स्ट्रैटेजी में, दे मूव टू द नेक्स्ट वन एंड फॉरगेट द प्रीवियस वन. सो गाइस, ये फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट स्टिकिंग टू द बेसिक्स वुड बी गेटिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम. इससे आपने बच के रहना है. And a lot of us after a certain level have to do the basics right, but basics at scale. That means if you got from 0 to 2 lakhs doing X activities, the best answer would be do more of X activity, don't get to Y. Right? ये बहुत hard to wrap around चीज़ है, मैंने बहुत late सीखी है, but that is what, right? One thing which I thought about recently was that अगर मैं साल में एक बार content, मैंने इससे पहले एक बार shoots, इस बार मैंने this year I have just done 2 shoots. One was day before yesterday, other one was on January 10th. The other day I thought that, if I created content once in a year, once in 7 months, and I was able to get my business to this, imagine if I do it every month. And that's what I've started doing. That's why we are recording this. And that is what. And for some, it's learning from people who have already done it. Right? Coaches में बहुत ego है. कोचेस को लगता है कि यार मुझे ज़्यादा पता है. अगर if that's your attitude, you need to get out of your comfort zone and get out of that ego zone, because learning from people who are doing better stuff in what you want to do is sorted. So getting out of your ego is getting out of the comfort zone, and that's what you need to do. Okay, so principles. Guys, the main principle you want to learn if you want to grow in 2023 is you are still working with humans. ऐसा नहीं है कि आप जादू के साथ काम कर रहे हो कि whatever. If you have watched कोई मिल गया, जादू was the alien. You have to work with humans. Keep that in mind. Number 1, psychological principle. 4 साल से psychology पढ़ रहा हूँ. If you give a lot of value to people without asking for anything in return, they want to pay you back. What do I mean to say? Provide more value in their inbox. ऑन इंस्टाग्राम बहुत बार कोचेस क्या करते हैं, इस बात पे बैठ जाते हैं कि यार रीच कम हो गई है, पिछले साल ज़्यादा, 30 साल कम है. सो व्हाट? कांट यू मैसेज पीपल? कांट यू मैसेज योर प्रॉस्पेक्ट्स? कांट यू फॉलो अप विद योर प्रॉस्पेक्ट्स? Guys, guys, keep in mind, if you want to convert someone, you need to have 7 touches with them. It's called the rule of 7. And ये हार्वर्ड ने स्टडी करी थी, मार्केटिंग रूल है, जिसमें मैं खुद स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ that someone should be getting value from you 7 times before they become your client. And value can be in any form. It can be in form of content. It can be in form of personal communication. So start communicating and helping people in your inbox. Start communication, and you can always do that in a non-salesy way. आप लोग गिल्टी पता क्यों फील करते हो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले? आप गिल्टी इसलिए फील करते हो बिकॉज आपको अपने मन में इंटेंट पता होती है. आपकी इंटेंट गलत होती है. इट्स नॉट प्रोवाइडिंग वैल्यू. योर इंटेंट इज okay, I won't your intent is just making the sale. If your intent is just making the sale, you'll feel guilty doing such things. Think of the long-term game and nurture people. Next is people invest in people, not in services. So, show your human side. Humanize yourself.
Stop acting perfect. Stop acting like your inspirational influencer. Be yourself. गैस ये चीज़ को भी रैप अराउंड करना बहुत डिफिकल्ट है. मैंने आई लर्न दिस इन ईयर 5 or 6 ऑफ माई करियर. बट बी योर सेल्फ एंड बी ह्यूमन. शो योर मिस्टेक्स. फोकस ऑन कनेक्शन. सिर्फ आप रील्स बना रहे हो. आई हैव सीन लॉट ऑफ कोचेज जो रील्स बनाते हैं, दे रील्स गो वायरल, दे हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, बट नो वन बाइज देयर सर्विस बिकॉज दे आर जस्ट क्रिएटिंग एंगेजिंग वैल्यू रील्स. यस, वैल्यू प्रोवाइड करो, बट शो योर पर्सनल लाइफ. Show your values, show your mistakes, show what you stand for, show what you stand against. Do all of these things and you'll change the game. Next is, if you don't offer, people won't buy. Especially on social media, people are not there to buy your service. People are there to pass their time. People just want to pass their time and कुछ बीच में knowledge आ जाती है तो वो खुश हो जाते हैं. But 98% of the people are not out there for intent of buying. But if they see your offers again and again, they would be like, okay, I'll message this person, I'll DM this person. So put out more offers. Next is, no one wants to buy from salesy and needy people. Guys, you need to have this attitude. I am fine either way attitude when you get on the calls, right? बीच में कोचेस क्या करते हैं, सेल्सी टेक्निक यूज़ करने लग जाते हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं ये वो. गाइस, इंडियन कस्टमर इज सो स्मार्ट एंड आई हैव लर्न दिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, टू बी ऑनेस्ट. इंडियन कस्टमर इज़ वेरी स्मार्ट. सेल्सी टेक्निक जहाँ पे आप फालतू की फेक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो या आप लोगों को प्रेशराइज कर रहे हो ऑन कॉल, पीपल गेट टर्न्ड ऑफ, पीपल हेट दिस. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो. येस, यूज साइकोलॉजी, यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बट डोंट यूज स्लीजी सेल्स टेक्निक्स एंड डोंट साउंड नीडी. Don't sound and act needy. अच्छे से अच्छा salesman who sounds needy is repulsive. लोग भाग जाते हैं, right? So don't sound needy. ये फालतू गिल्ट ट्रिपिंग ना करो लोगों की. People understand. People have well thought of every situation in their life before they get on a call with you, right? So ये फालतू की emotional techniques, sleazy salesy techniques and लोगों को pressurize करना is and fear mongering create करना doesn't work well. Again, that's my opinion. And yeah. नेक्स्ट इज, सोशल प्रूफ इज स्टिल द किंग. पोस्ट मोर रिजल्ट्स. पहले क्या होता था, आप रिजल्ट पोस्ट करते थे, बहुत सारे लीड्स ऑटोमेटिकली आ जाती थी. अब वैसा नहीं हो रहा है. पोस्ट मोर रिजल्ट्स एंड एंगेज विद एवरीवन हु engages with those results, right? So basically anyone who's liking the post, start conversations and that will change the game. But keep in mind, social proof is amazing for number one, getting referrals from people who know, like and trust you, because obviously someone who has got a transformation would share it. Second, it's great for brand building. Guys, nurture hack कैसे करना है आपने, respect hack कैसे करना है, by showing hundreds of results. Work on that and you'll change the game. And obviously you get more leads when you post more results, but do that in an engaging way. Post results in different manners. Post them on your stories, on your feed. Share the story. People connect with stories. Get on a live session, do a podcast with your clients, and you'll be good. We often don't need different, we need better and we need more. Guys, stick to the basics. Basics जो आपको 0 to 1 पे लेके आए हैं, chances are वो ही आपको 1 to 5 पे लेके जाएंगे. So you often need to do more of that. And for example, team building is a form of that, right? You have been using the principles, now you teach them to your team. You are sharing your principles with more people, right? So you need more and better than different. Stop running after shiny objects, stop running after shiny funnels, and that's what, if you want to run around, do that, and sooner or later you'll realize that YVS was right. Next is, shortcuts do not work in 2023. पहले भी नहीं work करते थे. कोई भी आपको promise कर रहा है shortcut, sorry, that doesn't work. शॉर्टकट्स अगर वर्क करते होते तो पूरी दुनिया शॉर्टकट ही लेती. why would I create content right now? If a 20-minute video was doing the job for me, why would I create content right now? And guys, if I create a 20-minute video, it's more persuasive because I have hundreds of results to show, deep knowledge to show, and there's a brand backing that. But yes, all I'm saying is these things also work, but build your brand. Next is, learn from people who have been there and who have done that. It's a great hack. It's my favorite hack, and this is also self-advertisement. And
Guys, that is all for today. If you have questions, feel free to reach out. If this podcast gave you value, our Instagram page would give you a hell lot of value. Instagram page out. If you think you want to apply the NSU method, which is called the no stone unturned method, the exact principles which I have explained here applied on your business, we'll change the game. We just play the long term game. That means 2023 हो या चाहे 2030 हो चाहे 2099 हो, we'll build your business in a way it's bulletproof, applying the principles which we have discussed here. And feel free to reach out at the rate fitnessbusinessaccelerator.in. There's a form below if you want to apply for joining our coaching, if you want to start and scale your business to multiple six figures and even seven figures using principles, not tactics. Using principles, building a principle based business. You can always fill the form. You can always DM us on Instagram. I myself am super active on Instagram, and keep on supporting. Share it with someone who might benefit from this. Share it with your friends and family if they are nutritionists, coaches, and PTs. Although these principles apply to all businesses, and hope this helps. And you can always DM us the word scale on Instagram, and see you on other side. If you have any questions, feel free to reach out. And thank you and bye.